सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते. தேவி நாராயணியம் தசகம் 11 பிரம்மநாரத சம்வாதம். ஸ்ரீநாரதः பத்மஜமேகதாக பிதஸ்த்வயா சிருஷ்டமிதம் ஜகத் கிம் கிம் விஷ்ணுனா வா கிரிஷேன வா கிம் அகர்த்ருகம் வா சகலேஸ்வரः கः இதி ரிதோஜசுதமாக சாது पृष्टं त्वया नारद मां शृणुत्वं विभाति देवी खलु सर्वशक्ते स्वरूपिणी सा भुवनस्य हेतुः एकं परं ब्रह्म सदद्वितीयम् आत्मेति वेदान्तवचोभिरुक्ता न सा पुमाश्री च न निर्गुणा सा स्त्रीत्वं च पुंस्त्वं च गुणैर्ददाति सर्वं तदावास्यमितं जगत् सा जाता न सर्वं ततएव जातं तत्रैव सर्वं च भवेत् प्रलीनं सैवाखिलं नास्ति च किञ्चनान्यं गौणानि चान्तःकरणेन्द्रियाणि सा निर्गुणा वाङ्मतिगोचरा च सा स्तोत्रमन्त्रैः सगुणा महद्भिः संस्तूयते भक्तविपन्निहन्त्री सुधा समुद्रे वसति यमार्या द्वीपे विचित्राद्भुतशक्तियुक्ता सर्वं जगत् यद्वशगं वयं च त्रिमूर्तयो नाम यदाश्रिता स्मः तद्दत्तशक्तित्रयमात्रभाजक त्रिमूर्तयः पुत्र वयं विनीताः तदाज्ञया साधु सदापि कुर्मो ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च दैवेन मूढं कविमातनोति साधुर्बलं तु प्रबलं करोति पङ्गुं गिरिं लङ्घयते च मूकं कृपावती चातनुते सुवाचं यत्किञ्चिदज्ञायि मया महत्त्वं देव्यास्तदुक्तं तव सङ्ग्रहेण सर्वत्र तद्वर्णय विस्तरेण विदस्व भक्तिं हृदये जनानाम् इति ऋतोजेन मुनिः प्रसन्नः तव प्रभावं करुणार्द्रचित्ते व्यासं ततान्यांश यतोचितं स प्रबोधयामास पवित्रवाग्भिः न मे गुरुस्त्वच्चरितस्य वक्ता न मे मतिस्त्वत्स्मरणैकसक्ता अवाच्य वक्ताहमकार्यकर्ता नमामि मातश्चरणाम्बुजं ते. ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக. தசகம் 12 உத்தத்ய ஜனனம். புரா த்விஜः கச்சன தேவதத்தோ நாம பிரஜாத்தம் தமசா சமீபே குர்வன்மகம் கோபிலசாபவாச்சா லேபே சுதம் மூடமனந்த துக்கக உதத்ய நாமா வவ்ருதே சபாலோ மூடஸ்து திருஷ்டன்ன ததர்ஷ கிஞ்சித் ஸ்ருதன்ன சுஷ்ராவ ஜகாதனைவ पृष्टो न च स्नानजपादिचक्रे इतस्ततोटन् समवाप्तगङ्गो जले निमज्जन् प्रतिबंस्तदेव वसन्मुनीनामुटजेषु वेद मन्त्रांश शृण्वन् स दिनानि निन्ये क्रमेण सत्सङ्गविवृद्ध सत्त्वः सत्यव्रतः सत्यतपाश्च भूत्वा नासत्यवाक्त्व कृपया समूढोऽपि उन्मीलितान्तर्नयनो बभूव कुलं पवित्रं जननी विशुद्धा पिता च सत्कर्मरतः सदा मे मया कृतं नैव निषिद्धकर्म तथापि मूढोऽस्मि जनैश्च निन्द्यः जन्मान्तरे किन्नु कृतं मयागं किं वा न विद्यार्थिजनस्य दत्ता ग्रन्थोऽप्यदत्तः किमु पूज्य पूजा कृता न किं वा विधिवन्न जाने नाकारणं कार्यमितीर्यते हि दैवं बलिष्ठं दुरतिक्रमं च ततोऽत्र मूढो विफलीकृतोऽस्मि वन्द्यध्रुवं निर्जलमेघवच्च इत्यादि सञ्चिन्त्य वने स्थितः स कदाचिदेकं रुधिराप्लुताङ्गं बीभत्सरूपं किटिमेष पश्यन् अय्यय्य इत्युत्स्वनमुच्चचार शरेण विद्धः स किरिर्भयार्तः प्रवेपमानो मुनिवासदेशे अन्तर्निकुञ्जस्य गतश्च दैवात् अदृश्यतामापभयार्तिहन्त्री विनामकारञ्च विना च भक्तिम् उच्चार्य वाग्बीजमणं पवित्रं प्रसन्नबुद्धि कृपया तवैष बभूव दूरीकृत सर्वपापः नाकं कविर्गान विचक्षणो न नटो न शिल्पादिषु न प्रवीणः पश्यात्र मां मूढमनन्यबन्धुं प्रसन्नबुद्धिं कुरु मां नमस्ते. ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக. தசகம் 13 உத்தத்ய மகிமா. अथागतः कश्चिदधिज्य धन्वा मुनिं निषादः सकसा जगाद
त्वं सत्यवाग्ब्रूहि मुने त्वया किं दृष्टः किटिः सायकविद्ददेहः दृष्टस्त्वया चेत् वदसूकरः क्व गतो न वा दृश्यत किं मुनीन्द्र अहं निषादः खलु वन्यवृत्तिः ममास्ति दारादिकपोष्यवर्गः श्रुत्वा निषादस्य वचो मुनिः स तूष्णीं स्थितश्चिन्तयति स्म गाढं वदामि किं दृष्ट इतीर्यते चेत् हन्यादयन्तं मम चाप्यगं स्यात् सत्यं नरं रक्षति रक्षितं चेत् असत्यवक्ता नरकं व्रजे च सत्यं हि सत्यं सदयं न किञ्चित् सत्यं कृपाशून्यमिदं मतं मे एवं मुनेश्चिन्तयत स्वकार्यव्यग्रो निषादः पुनरेव मुचे दृष्टस्त्वया किं सकिटेर्न किं वा दृष्टः स शीघ्रं कथयात्र सत्यं मुनिस्तमाहात्र पुनः पुनः किं निषाद मां पृच्छसि मोहमग्नः पश्यन्न भाषेत न च ब्रुवाणः पश्येदलं वाग्भिरवेहि सत्यम् उन्मादिनो जल्पनमेतदेवं मत्वा निषादः सकसा जगाम नासत्यमुक्तं मुनिना न कोलो हतश्च सर्वं तव देवि लीलाः द्रष्टा परं ब्रह्म तदेव च स्यात् इति श्रुतिः प्राक् न भाषते सः सदा ब्रुवाणस्तु न पश्यतीदम् अयं हि सत्यव्रतवाक्यसारः भूयः स सारस्वत बीजमन्त्रं चिरं जपन्याननिधिः कविश्च वाल्मीकिवत् सर्वदिशि प्रसिद्धो बभूव बन्धून् समतर्पयच्च स्मृता नता देवी सपूजिता वा श्रुतानुता वा खलु वन्दिता वा ददासि नित्यं हितमाश्रितेभ्यः कृपार्द्रचित्ते सततं नमस्ते ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः दशकं 14 सुदर्शन कथा भरद्वाजाश्रम प्रवेशम् राजा पुरासीत् किल कोसलेषु धर्मैकनिष्ठो ध्रुवसन्धिनामा आस्तां प्रिये अस्य मनोरमा च लीलावती चेति दृढानुरक्ते मनोरमा सूत सुदर्शनाख्यं कुमारकं शत्रुजितं च सान्या संवर्धयं स्तौ मृगया विहारी वने नृपोः हरिणा हतो भूत् विचिन्तयन् राजकुलस्य वृत्तं तज्ज्येष्ठपुत्रस्य सुदर्शनस्य राज्याभिषेकाय गुरुर्वसिष्ठः चकार मन्त्रं सचिवैः समेतः मातामहः शत्रुजितो युधाजित् अभ्येत्य सद्यो मितवीर्यशाली राज्ये स्वदौहित्रमिहाभिषिक्तं कर्तुं कुबुद्धिः कुरुते स्म यत्नं मनोरमाया अपि वीरसेनः पिताभ्युपेत्याशुरुरोदतस्य यत्नं बलि स्वसुतासुताभिषु एकैकबुद्धिः खलु तावभूतां कृत्वा विवादं च ततो नृपौ द्वौ घोरं रणं चक्रतुरिद्धरोषौ युधाजिता तत्र तु वीरसेनो दैवात् हतो भूत् हरिणा करीव राज्येऽभिषिक्तः खलु शत्रुजित्सः बालस्ततोऽयं रिपुभिर्युधाजित् दौहित्रराज्यं सुखमेकनाथः शशास वज्रीव दिवं महेशी पत्युः पितुश्चापि मृतेरनाथ भीता विदळ्लाभिद मन्त्रियुक्ता मनोरमा बालसुतात्वरण्ये ययो भरद्वाज मुनिं शरण्यं तपोनिधिर्दीनजनानुकम्पी ज्ञात्वा मुनिस्तां ध्रुवसन्धिपत्नीम् उवाच वत्से वस निर्भयैव तपोवनेत्रास्तु शुभं तवेति अल्पोऽप्युपेक्ष्यो न रिपुर्नरोगोऽपि एवं स्मरन्नाशु नृपो युधाजित् तां हर्तुकाम ससुतां महर्षेः प्रापाश्रमं मन्त्रिवरेण साकं न मानितस्तेन तपस्विना स मनोरमां नैव सुतं च लेभे प्रकर्तुकामोऽपि मुनिं स मन्त्री वाचा निवृत्तः श्रुतकौशिको भूत् एवं मुनिस्तां ससुतां ररक्ष भीतोऽस्मि संसारयुधाजितोऽहं न मे सखायोऽस्ति विना त्वयैष सनो पुरन्ते चरणं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः
दशकं 15 सुदर्शन कथा देवी दर्शनम् एवं तवैव कृपया मुनिवर्यशीत छायाश्रितो हतभयः सुदर्शनोऽयं वेदध्वनिश्रवणपूतकृदाश्रमान्ते सम्मोदयन् मुनिजनान् ववृदे कुमारः आबाल्यमेष मुनिबालकसङ्गमेन क्लीं क्लीमितीश्वरि सदा तव बीजमन्त्रम् तत्रोचचार कृपयास्य पुरः कदाचित् आविर्बभूवितनतं तमभाषताश्च प्रीतास्मिते सुतजगज्जननीमवेहि मां सर्वकामवरदां तव भद्रमस्तु चन्द्राननां शशिकलां विमलां सुबाहोः काशीश्वरस्य तनयां विधिनोद्वहत्वं नष्टा भवेयुरचिरेण तवारिवर्गाः राज्यं च यैरपहृतं पुनरेष्यसि त्वं मातृद्वयेन सचिवैश्च समं स्वधर्मान् कुर्या सदेति समुदीर्य तिरोददात स्वप्ने त्वया शशिकला कथितास्ति भारद्वाजाश्रमे प्रतितकोसलवंशजातः धीमान् सुदर्शन इति ध्रुवसन्धिपुत्र येनं पतिं वृणुस्तवास्तु शुभं सदेति स्वप्नानुभूतमनृतं किमृतं न वेति सुप्तोतितातुमतिमत्यपि न व्यजानात् पृष्ठा सुदर्शन कथां सुमुखी द्विजात्सा श्रुत्वानुरक्तहृदयैव बभूव देवी ज्ञात्वा सुबाहुरिदमाकुलमानसस्ताम् अस्मान् निवर्तयितुमाशु सखेष्टपत्न्या कृत्वा प्रयत्नमखिलं विफलं च पश्यन् इच्छा स्वयं वरविधिं हितमेव मेने कश्चित् कदाचन सुदर्शनमेत्य विप्रक प्राहागतः शशिकला वचसाहमत्र सा त्वां ब्रवीति नृपपुत्र जगज्जनन्या वाचा वृतोऽसि पतिरस्मि तवैव दासी अत्रागता नृपतयो बहवस्त्वमेन्य तेषां सुधीरमिषतां नयमां प्रियान्ते एवं वधूवचनमानयतां सुशीलां भद्रं तवास्विदमुदीर्य जगाम विप्रः स्वप्ने च जाग्रति च पश्यति भक्तवर्यः त्वां सन्ततं तव वचो मधुरं शृणोति ऐश्वर्यमाशु लभतेऽपि च मुक्तमेति त्वद्भक्तिमेव मम देहि नमो जनन्यै ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமக தசகம் 16 சுதர்சன விவாகம் ஸ்ருத்வா வதூவாக்யமரம் குமாரோ கிருஷ்டோ பரத்வாஜ முனிம் பிரணம்ய ஆப்ருச்ய மாத்ரா சகதேவி சத்வாம் ஸ்மரன் ரதேனாப புரம் சுபாகோः ஸ்வயம் வராகூத மகீபுஜாம் சபாம் பிரவிஷ்டோ கதபீர்நிஷன்னக கன்யா கலா பூர்ண சசித்வசாவிதி आहुर्जनास्तावभिवीक्ष्यमाणाः वधूश्च तद्दर्शनवर्धितानुरागा स्मरन्ति तव वाक्यसारं सभां नृपाणामजितेन्द्रियाणां न प्राविशत्सा पितृचोदितापि शङ्काकुलास्ते नृवरा बभूवुः उच्चैर्युधाजित् कुपितो जगाद मादीयतां लोकहितानभिज्ञा वधूरशक्ताय सुदर्शनाय बालोऽयमित्येष मया श्रमे प्राग् उपेक्षितः सोऽत्र रिपुत्वमेति मायं च वद्वा व्रियतां वृतश्चेत् हन्यामिमं तां च हरेयमाशु श्रुत्वा युधाजित् वचनं नृपालाकितैषिनः केचिदुपेत्य सर्वं सुदर्शनं प्रोचुरतापि धीरः स निर्भयो नैव चचालदेवी एकत्र पुत्री च सुदर्शनश्च युधाजिदन्यत्र बली सकोपक तन्मध्यगो मंक्षु नृपः सुबाहुः बद्धाञ्जलिः प्राह नृपान् विनम्रः नृपावचो मे शृणुतेह बाला नायाति पुत्री मम मण्डपेऽत्र तत्क्षम्यतां श्वोत्र नयाम्यहं तां याताद्यवो विश्रममन्दिराणि गतेषु सर्वेषु सुदर्शनस्तु त्वां संस्मरन् मातृहितानुसारी सुबाहुना तन्निशितेन दत्तां वधूं यथा विद्युद्वाह देवी प्रातर्युधाजित् प्रबलो विवाह वार्तां निशम्यात् तरुषा ससैन्यक सुदर्शनं मातृवधू समेतं यात्रोन्मुखं भीमरवोरुरोध ततो रणे घोरतरे सुबाहुः क्लीं क्लीमिति शाणि समुच्चचार
तत्र विरासि समराङ्कणे त्वं सिंहादिरूढा स्वजनार्तिहन्त्री त्वन्नाम गायन् कथयन् गुणांस्ते त्वां पूजयंश्चात्र नयामि कालं स्वप्नेऽपि दृष्टा न मया त्वमम्बे कृपां कुरु त्वं मयि ते नमोऽस्तु। अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा। ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः। दशकं 17 सुदर्शन कोसल प्राप्ति। युधाजितं शत्रुजितं च हत्वा रणाङ्कणस्थानुतिभिः प्रसन्ना सुबाहुमुख्यान् अनुगृह्य भक्तान् सर्वेषु पश्यत्सु तिरोददात। पृष्ठो नृपान् प्राह सुदर्शनस्तान् दृष्टा भवद्भिः खलु सर्वशक्ता या निर्गुणा योगिभिरप्य दृश्या च भक्तैः सगुणा विनीतैः या राजसीदं सृजतीव शक्तिः या सात्विकी पालयतीव विश्वं या तामसी संहरतीव सर्वं सद्वस्तु सैवान्यदसत्समस्तं। भक्तार्तिहन्त्री करुणामयी सा भक्तद्रुकां भीतिकरी प्रकामं वसन् भरद्वाज तपोवनान्ते चिराय मात्रा सकतां भजेऽहम् तामेव भक्त्या भजतेह भुक्ति मुक्तिप्रदामस्तु शुभं सदावक। श्रुद्वेदमानम्रमुखास्ततेति सम्मन्त्र्य भूपाश्च ततो निवृत्ताः सुदर्शनो मातृवधू समेतः सुबाकुमापृच्य रथाधिरूढः पुरीमयोध्यां प्रविशन् पुरेव सीतापतिस्तोषयति स्म सर्वान् लीलावतीं प्राप्य विमातरञ्च नत्वा विषन्नां हतपुत्रतातां सदुक्तिभिः कर्म गतिः प्रबोध्य ससान्त्वयामास महेशि भक्तः जनेषु पश्यत्सु सुदर्शनोऽत्र त्वां पूजयित्वा गुरुणाभिषिक्तः राजी त्वदीयं गृहमाशु कृत्वा पूजाविधानादि च संवृदत्त तस्मिन् नृपे त्वत्सदनानि कृत्वा जनाः प्रतिग्राममपूजयं स्वां काश्यां सुबाहुश्च तथा करोते सर्वत्र पेतुः करुणाकटाक्षाः न कर्मणा न प्रजया धनेन न योगसाङ्ख्यादिविचिन्तया च न च व्रतेनापि सुखानुभूतिः भक्त्यैव मर्त्य सुखमेति मातः नाहं सुबाहुश्च सुदर्शनश्च न मे भरद्वाज मुनिशरण्यः गुरुः सुहृद्बन्धुरपि त्वमेव महेश्वरि त्वां सततं नमामि। ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः। दशकं 18 रामकथा। सूर्यान्वये दाशरथी रमेशो रामाभिदोऽभूत् भरतोऽथ जातः ज्येष्ठानुवर्ती खलु लक्ष्मणश्च शत्रुघ्ननामापि जगद्विधात्री विमातृवाक्योजितराज्यभोगो रामः स सीतः सह लक्ष्मणश्च चरन् जटावल्कलवाणरण्ये गोदावरी तीरमवापदेवी तं वञ्चयन् रावणयेत्यमायी जहार सीतां यतिरूपधारी रामस्य पत्नी विरहातुरस्य श्रुत्वा विलापं वनमप्यरोदीत् श्रीनारदोऽभ्येत्य जगाद रामं किं रोदिषि प्राकृतमर्त्यतुल्यः त्वं रावणं हन्तुमिहावतीर्णः हरिः कथं विस्मरसीदमार्य कृते युगे वेदवतीति कन्या हरिं श्रुतिज्ञा पतिमाप्तुमैच्छत् सा पुष्करद्वीपगता तदर्थम् एकाकिनी तीव्रतपश्चकार श्रुता तया भूत् अशरीरि वाक्ते हरिः पतिर्भाविनि जन्मनि स्यात् निशम्य तत्हृष्टमनास्तथैव कृत्वा तपस्तत्र निनाय कालं तां रावणः कामशरार्दितः संशकर्ष सा च स्तवनेन देवीं प्रसाद्य कोपारुणलोचनाभ्यां निरीक्ष्य
तं निश्चलमाततान् शशापतं च त्वमरे मदर्ते स बान्धवो राक्षसनंक्ष्यसीति स्वं कौणपस्पृष्टमशुद्धदेहं योगेन सद्यो विजहौ सती सा जाता पुनः सा मिथिलेशकन्या काले हरिं त्वां पतिमापदैवा स कन्यतां सत्वरमाशरेन्द्रः तन्नाशकालस्तु समागतश्च तदर्थमाराधय लोकनाथां नवाहयज्ञेन कृतोपवासः प्रसाद्यतामेव सुरानराश्च कामान् लभन्ते शुभमेव ते स्यात् इत्युचिवांसं मुनिमेव राम आचार्यमाकल्प्य स लक्ष्मणस्त्वां सम्पूज्य सुस्मेरमुखीं व्रतान्ते सिंहादिरूढाञ्च पुरो ददर्श भक्त्या नतन्तं द्रुतमाथ राम हरिस्त्वमंशेन मदाज्ञयैव जातो नरत्वेन दशास्य हत्यै ददामि तच्छक्तिमहं तवेह श्रुत्वा तवोक्तिं सहनूमदाद्यैः साकं कपीन्द्रैः कृतसेतुबन्धः लङ्कां प्रविष्टो हतरावणाद्यः पुरीमयोध्याम् अगमत् ससीतः हादे विभक्तिर्न हि मे गुरुश्च न चैव वस्तुग्रहणे पटुत्वं सत्सङ्गतिश्चापि न ते पतन्तु कृपा कटाक्षा मयि ते नमोऽस्तु रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। दशकं 19 भूम्याः दुःखम् पुराधरा दुर्जन भारदीना समं सुरभ्या विबुधैश्च देवी विधिं समेत्य स्वदशामुवाच स चानयत् क्षीरपयोनिधिं तान् सुतो हरिः पद्मभवेन सर्वं ज्ञात्वाखिलान् साञ्जलिबन्धमाह ब्रह्मन् सुराणैव वयं स्वतन्त्रा दैवं बलीयः किमहं करोमि दैवेन नीतः खलु मत्स्य कूर्म कोलादिजन्मान्यवशो हमाप्तः नृसिंहभावादतिभीकरत्वं हयाननत्वात् परिहास्यताञ्च जातः पुनर्दाशरतिश्च दुःखात् दुःखं गतोऽहं विपिनान्तचारी राज्यञ्च नष्टं दयिता हृता मे पिता मृतोऽका प्लवगा सहायाः कृत्वा रणं भीममरिं निहत्य पत्नी च राज्यं च पुनर्गृहीत्वा दुष्टापवादेन पतिव्रतां तां विहाय कादुर्यशसाभिषिक्तः यदि स्वतन्त्रोऽस्मि ममैव मार्तिः न स्याद्वयं कर्म कलापबद्धाः सदापि मायावशगास्ततोऽत्र मायादिनाथां शरणं व्रजामः इति ऋतैर्भक्तिविनम्रशीर्षैः निमीलिताक्षैर्विबुधैः स्मृता त्वं प्रभातसन्ध्येव जपा सुमाङ्गी तमो निहन्त्री च पुरस्थितात् जाने दशाम्बो वसुदेवपुत्रो भूत्वो हरिर्दुष्टजनान् निहन्ता तदर्थशक्तिरहमस्य दद्याम् अंशेन जायेय च नन्दपुत्री यूयं च साहाय्यममुष्य कर्तुम् अंशेन देवा दयिता समेताः जायेद्वमूर्व्यां जगतो सुभद्रम् एवं विनिर्दिश्य तिरोददात् विचित्रदुष्टासुरभावभार निपीडितं मे हृदयं महेशी अत्रावतीर्येदमपाकुरुत्वं माता हि मे ते वरदे नमोऽस्तु। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। दशकं 20 देवकीपुत्र वदम् अथोरुपुण्ये मथुरापुरे तु विभूषिते मौक्तिकमालिकाभिः श्रीदेवकी शौरिविवाहरङ्गे सर्वैः श्रुतं व्योमवचस्फुटार्थम् अवेहि भो देवकनन्दनायाः सुतोष्टमः कंस तवान्तकस्यात् श्रुत्वेति तां हन्तुमसिं ददानः कंसो निरुद्धो वसुदेवमुख्यैः अथाह शौरि शृणु कंसपुत्र ददामि ते स्यात् शपथं करोमि एतद्वचो मे व्यभिचर्यते चेन्मत्पूर्वजाता नरके पतन्तु श्रद्धाय शौरेर्वचनं प्रशान्तः तां देवकीं भोजपतिर्मुमोच सर्वे च तुष्टा यदवो नगर्यां
तौ दम्पती चोषतुरातमोदं काले सती पुत्रमसूततातः कंसाय निःशङ्कमदासुतं स्वं हन्तानमेयं शिशुरित्युदीर्य तं प्रत्यदात् भोजपतिश्च तस्मै अथाशु भूभार विनाशनाख्य त्वन्नाटकप्रेक्षणकौतुकेन श्रीनारदः सर्वविदित्य कंसम् अदृश्यहासं सकलं जगाद त्वं भूपदैत्यः खलु कालनेमिकी जगत्प्रसिद्धो हरिणा हतश्च ततोऽत्र जातोऽसि सुराहरिश्च त्वां हन्तुमिच्छन्त्यधुनापि शत्रुं देवास्तदर्थं नररूपिणोऽत्र व्रजे च जाता वसुदेवमुख्याः नन्दादयश्च त्रिदशा इमेन विजृम्भणीया न च बान्धवास्ते त्वं व्योमवाणीं स्मरदेव कस्य पुत्र्या सुतेष्वष्टमतां गतः सन् स त्वां निहन्ता हरिरेव शत्रुः अल्पोऽपि नोपेक्ष्य इतीर्यते हि सर्वात्मजानां नृपमेलने स्याः सर्वेष्टमास्युः प्रथमे च सर्वे मायाविनं विद्धि हरिं सदेति गते मुनौ क्रोधमियाय कंसः सदेवकी सूनुमरं जगान कारागृहे तां पतिमप्यबध्नात् तयोः सुतान् षट् खलु जातमात्रान् हत्वा कृतं स्वं हितमेव मेने कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा मा जातु पापं करवाणि देवी ममास्तु सत्कर्म रतिः प्रियस्ते भवानि भक्तं कुरु मां नमस्ते। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः।